हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए एचटेट पीजीटी फिज़िक्स जनवरी 2019 का पेपर का थर्ड वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। पहली दो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें 90 क्वेश्चन से लेकर 108 क्वेश्चन तक सोल्व किए गए हैं। 109 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि थॉमसन क्रॉस सेक्शन सिग्मा टी डायमेंशन ऑन बेसिस के ऊपर किस फार्मूले के लिए करेक्ट होगा। डायमेंशनली करेक्ट फार्मूला बताना है। तो सिग्मा टी है वो डायमेंशन है किसका, एरिया का। तो डायमेंशन ऑफ एरिया हैज़ द डायमेंशन एल स्क्वायर। और हम यहाँ देख रहे हैं कि इनमें सब में ई स्क्वायर बाई 4πε0 टर्म है। तो ई स्क्वायर बाई 4πε0 जो होता है वो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होते हैं ना, उसके लिए डायमेंशन आता है। और नीचे एम सी स्क्वायर भी दिख रहा है। तो ये किसके लिए होता है एम सी स्क्वायर, ये आपका एनर्जी के लिए डायमेंशन होता है। तो आप बस क्या करोगे, हमें पता है कि ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर ये फोर्स का डायमेंशन होता है, लेकिन हमारे पास ये टर्म है बस। तो इसके लिए ई स्क्वायर बाई 4πε0 का जो डायमेंशन हो जाएगा वो एफ इंटू आर स्क्वायर होगा। और एम सी स्क्वायर अगर इसके नीचे कर देते हैं तो आपकी एनर्जी और आ जाएगी नीचे, दैट इज़ फोर्स इंटू डिस्टेंस। यहाँ से ये डिस्टेंस का डायमेंशन रहेगा और हमें चाहिए एरिया। एरिया क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस टर्म का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन के लिए करेक्ट है। तो 109 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा डायमेंशनली। 110 नंबर क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के क्लासिकल लिमिट के लिए, और वो किसके लिए, ग्राउंड स्टेट के लिए। हमें पता है कि वन डायमेंशन जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसका ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन होता है, उसकी वैल्यू होती है आपके पास एम ओमेगा बाई पाई एच का रेज टू पावर 1/4 ई रेज टू पावर माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एम ओमेगा by 2h cut by taking omega by h cut is equal to alpha, omega by h cut alpha, then wave function will be, ground state wave function psi naught will be omega by m omega by h, तो alpha by pi raised to power 1/4 e raised to power minus alpha x square by 2. Now for finding the probability of wave function we should find the square of the wave function, that is psi naught square, or alpha by pi raised to power 1/2 e raised to power minus alpha x square. Now probability, we find the probability for outside the limit, classical limit, and then subtract it this value from 1, we find the probability of finding inside the classical limit. So for this we solve probability outside, that is 2 times, क्योंकि that value from minus 1 by root alpha to minus infinity also, so 1 by root alpha to infinity pi by alpha by pi raised to power 1/2 e raised to power minus alpha x square dx. Now by putting alpha x square equal to y, we get p out equal to 2 times yeah 2 by root pi e raised to power in 1 to infinity e raised to power minus y square dy, that is the complementary error function, or this has the value 15.84 approx 16%. So probability of finding the particle inside the classical limit 1 minus 16%, that is 1 is 100%, that is 84%. So option 2 is correct. Option 2 is correct, 84%. In question number 111, the two coils are placed close to each other. The mutual inductance of the pair of the coils depends upon. So the mutual inductance between the coils depend upon the relative position and orientation of the two coils. Option number 4 is correct for this.
In question number 112, the coherence time for the source is 10⁻⁻8 second is given. If the vacuum wavelength is lambda naught, that is 650 nanometer, we have to find line width for the source. As we know that lambda c is equal to lambda nu. By differentiating we get 0 is equal to lambda into d nu plus nu into d lambda, यानी d lambda by d mu equal to d lambda by d mu equal to lambda by mu, और d lambda is equal to minus lambda by mu into d mu, और mu is equal to c by lambda. mu की वैल्यू c by lambda डालेंगे तो c by lambda ऊपर जाएगा स्क्वायर into d mu, और also frequency is reciprocal of the time tau. Here tau is 10⁻⁻8 second relaxation time, or by using this value minus lambda square by c into tau. By putting these values we can find this t lambda, that is the value of line width equal to lambda is given 650 nanometer. तो square of lambda is 650 into 650 or nanometer, 10⁻⁻18 meter, divided by c has the value 3 into 10⁸ into relaxation time has the value 10⁻⁸. So 650 into 650, that is 25, 4 6 7 ja into 20, 10⁻⁻18 meter, divided by 3. By dividing by 3, 3 1 ja 3, 4 ja 12, 0 ja 8 ja 0 0 into 10⁻⁻18 meter. By shifting the points 1 2 3 4 5 places 1.4, or removing this by increasing 1 4 1 into 10⁻⁻13 meter, that has the value 1.41 into 10⁻⁻4 nanometer. So the correct option for line width delta lambda will be option number first is correct. Option number first is correct. In question number 113, there are number of turns in the primary secondary coils are in the ratio 40 and 5. A load resistance 2 kilo ohm is connected in the secondary circuit. The current in the secondary circuit is 100 milliampere. The reflected impedance of the transformer will be, as the turns in primary coils is 40, in secondary coil are 5. The ratio of the coils in the coils primary and secondary coil are in the ratio 40:5, that is 8:1. So the impedance should be in the ratio, the voltage are in the ratio 60:1, square of this, square of the turns, and 1 square, n square by 1 ratio, 64:1, and the output reflected impedance is ratio into n square into output resistance RL. Here that is value 64 into RL has the value 2 kilo ohm, so that is 128 kilo ohm is the correct option. Option number first is correct. Thanks.